Okay, so now there is one scenario whenever we will delete account record. So we have to send the mail to the user, yeah, to the owner of the record, and we have to write the information of the record in the mail. So these are the object. Account is the object where we will write the trigger. Event we will use delete, and trigger we will use after because we have to send the mail, and mail is the another object. Okay, so we are working on another object, so that's why we will use after. And when record will delete, that time mail should be sent. So first record should be deleted. Okay, so after deleting the record. Okay, now what I'm doing, I'm going to create the trigger. So same trigger I'm going to update. So after delete, we have to write the condition for after delete. So I'm writing else if trigger dot is after and trigger dot is delete. Then what I'm doing, I'm going to create one method which I'll call here public static void after delete. Okay, and I'll pass a- all type of data, all records. So I'm writing list of account, and here I'm writing all records, all record list. Okay, I'm sending all records. Now go to the, I'm going to call it in a trigger. So I'm writing class name dot method. Class name I have written. Now I'm going to call the method. So method is after delete method, and we have to send the old data which I'm sending. Okay. Now come to the helper class. Write the logic. So I'm going to iterate first record for account ACC list. Okay. Now we have to send the mail. I'm going to write the code to send the mail also. So first I'm going to take some value system dot debug email acc dot owner id developer. So I'm checking, I'm getting the email ID of the user without querying or not. Okay, so field name is owner ID. Unknown foreign key cannot be referenced in the path express. Okay, directly we can't call.
Okay, what I'm doing, I want to send the mail. So send messaging dot send mail method we use. सर एक And बार ओनर डॉट नेम करके देखो। okay, ma'am. Okay, first I'm checking I'm getting the data or not. So record 5, I'm going to delete it. So when I will delete, after deleting the record, this code will execute and we should get some data in logs. Email null. Record 4, let me check the owner details, Koran Susani. Going to delete it. Null, null. Okay, so I'm not getting the data. What I'm doing, I'm going to send the दोनों mail. लाइन पे दोनों वो लाइन पे ईमेल क्यों आ रहा था डीबग में? दूसरी लाइन पे नेम नहीं आना चाहिए था? मतलब ईमेल ये वाला नेम आ रहा था. अच्छा अच्छा, ओ ओके ओके। So I want to send the mail. To send the mail, I'm going to write the code. Okay, now I'm going to create the template which I want to send to the user. So to create the template, we use messaging namespace dot single email message. Any name we can write msg. It's equal to new messaging dot single email message. And that message we will add in list of messaging email. Then we will send to the user. So I'm going to add it. Okay, then I'm going to create the template. So message dot set to address. So we have to pass list type of data. So I'm going to create one list. List of string email is equal to new list of string and going to add the mail ID.
and here I'm passing email list. ठीक है, जिसको ईमेल भेजनी है वो हमने पास कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस सब्जेक्ट. So subject is deleted account records. Next we have to write the body. Then we have to write sender display name. Okay, so body, I'm going to pass the body. String body. So here, hi, comma. Then go to the next line. Your record information. After that, I want to go in next line. So VR tag. Then body is equal to body plus whatever the information I want to display. I want to display account name plus acc dot name, then plus I want to go in next line. So VR tag. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है यू कैन सेंड इट. नेम फोन डिस्क्रिप्शन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेंड इट. ठीक है, अगर यूजर की ईमेल आईडी चाहते हो आप, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टोर दी सर ओनर बिना आईडी. क्वेरी के हम नहीं फेच कर सकते ना उसके रिलेटेड की वैल्यू। हाँ हाँ, उसको एक लिस्ट में स्टोर करो या कहीं मतलब सेट में स्टोर करो. देन आउटसाइड द फॉर ईच लूप राइट दी query, fetch the email ID, then store it in a list and pass the list here. ठीक है, so I'm going to create the record, then I'll check I'm getting the mail or not. So record 3, phone number and description I'm checking, and if active I'm making false. ठीक है, now what I'm doing, I'm going to delete it, and on delete I'm checking record has been deleted or not. कि delete किया, record तो delete हो गया है. Now I'm getting the mail or not, we have to check. So I'm going to open my mail ID. So me, yeah, I'm getting mail. So hi, your deleted account information record, your deleted account record information. Account name record 3,
Account phone number 123, account description, phone number has been changed from null to 123 by Quran Hussain. So information is coming. ठीक है, so it's a way to send the mail by trigger. So on delete of any record you want to send the mail, so you can send. ठीक है, जिसका आप रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो उसको सेंड करना चाहते हो उसको सेंड कर सकते हो इस ईमेल लिस्ट में, ईमेल लिस्ट डॉट एड acc.email। ठीक है, कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, वॉट एवर यू वॉन्ट राइट यू कैन राइट इट। किसी यूज़र को फैच करना है, किसी पर्टिकुलर यूज़र को ही भेजना है तो उसकी मेल आईडी लिख दो। इफ़ यू वांट द ओनर ऑफ दिस रिकॉर्ड, then store the id of owner acc.owner id in a set, then fetch the information of the user, then एक लिस्ट में डालो, सेंड कर दो उसको। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट इन दिस सिनेरियो? सभी के लिए ओके है ये? यस सर। गुड। Okay, so next scenario which I'm going to take, that is when any user, I don't want to give the delete permission. ठीक है, I don't want to give the delete access to any user except system admin। Okay, so what's my scenario? I don't want to give the delete access to any user। ठीक है, if any user is trying to delete, if any user is trying to delete the account record, so we have to display error message, to display error message, sorry, only system admin can delete the record। Okay, we have displayed this error message। Okay, sorry user, you can't delete the record, only system admin can delete the record। Okay, so it's the interview question, when you will give the interview, so in interview that question will arise। Okay, let's suppose, how can we execute the validation rule on the basis of profile, yeah, on the basis of user? How can we execute the trigger on the basis of profile and user? These are the interview question। ठीक है, कि हमें ट्रिगर ये कभी एग्जीक्यूट होए, अगर प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है तो ट्रिगर एग्जीक्यूट होए, अदरवाइज एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। कि ट्रिगर के बेस मतलब कि उसको प्रोफाइल के बेसिस पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ट्रिगर को। हाउ विल एग्जीक्यूट द ट्रिगर ऑन द बेस ऑफ प्रोफाइल एंड यूजर। ठीक है, कि अगर यूजर और आंसर, सो इट शुड बी एग्जीक्यूट एल्स इट शुड नॉट एग्जीक्यूट। Okay, so first we will check on which object we will write, which event we will use, which type of trigger। Tell me। ऑब्जेक्ट अकाउंट, Object account, इवेंट डिलीट, event delete, ट्रिगर बिफोर। trigger before। Before is correct, a cell we have to use after। सर बिफोर इज Yeah,
क्योंकि हम बिफोर यूज़ करेंगे, डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं होनी चाहिए, उससे पहले एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो एरर मैसेज कहाँ डिस्प्ले कराना है, सेम ऑब्जेक्ट पे। We have to display the error message whenever user will try to delete the account record. Display error message on that record. You can't delete the account record. Only system admin has access. ठीक है, तो बिफोर डिलीट का यूज करेंगे। सो इन ट्रिगर वी हैव बिफोर डिलीट आल्सो। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो मैं क्रिएट करने वाला हूँ बिफोर डिलीट का दूसरा सिनेरियो। पब्लिक स्टैटिक void बिफोर डिलीट सेकंड मेथड लिस्ट ऑफ अकाउंट and we will get old account record. Okay, then I'm going to trade it. ठीक है, ये तो हमें सब में करना होता है, कर लिया हमने। नाउ वी हैव टू राइट द लॉजिक। ठीक है, हमें लॉजिक लिखना है कि अगर सिस्टम एडमिन है, इफ सिस्टम एडमिन इज ट्राइंग टू, ठीक है, सिस्टम एडमिन को एक्सेस दे रहा है, अगर सिस्टम एडमिन नहीं है तो हमें क्या करना है, एरर मैसेज। तो प्रोफाइल, अगर सिस्टम एडमिन नहीं है तो क्या डिस्प्ले हो जाए, एरर मैसेज। एरर मैसेज लिखना हम पे आता ही है। ठीक है, ये कंडीशन लिखनी है। ठीक है, जो यूजर ने और खोली रिकॉर्ड एडिट कर रहा है, अगर उस यूजर की प्रोफाइल सिस्टम एडमिन नहीं है तो एरर मैसेज। अगर वो यूजर की प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो। तो हमें क्या चाहिए, जो भी यूजर ओपन करे उसकी प्रोफाइल चाहिए पहले। फर्स्ट स्टेप, वी नीड प्रोफाइल ऑफ करंट यूजर। जिसने भी ओपन करा उसकी प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट करंट यूजर इंफॉर्मेशन यू कैन यूज यूजर इन्फो। ठीक है, प्रोफाइल निकालते हैं। प्रोफाइल इज आल्सो ए ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेटअप। ठीक है, सेलेक्ट आईडी कॉमा सर नेम। आपने जैसे करंट यूजर निकाला वैसे करंट प्रोफाइल भी निकाल सकते हैं। यूजर, उसको लिख क्या कोड, मतलब कुछ यूजर प्रोफाइल सर डालना होता हाँ है। सर वैसे ही लिखते हैं जैसे आपने करंट यूजर निकाला ना वैसे वैसे ही करंट हम्म, प्रोफाइल भी निकल जाती है सर। यूजर इन्फो डॉट, हाँ नेम होते हैं, गेट प्रोफाइल नेम लाइक दैट। हाँ, मतलब फंक्शन है ऐसी, क्लास क्लास एंड फंक्शन है जो करंट को भी दे देगी, प्रोफाइल भी। बट इफ यू विल नॉट गेट, वी कैन फाइंड आउट दी करंट यूजर नेम। ठीक है, जो भी वर्क कर रहा है यूजर इन्फॉर्मेशन में, यूजर यूजर की इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें, उसकी जो भी प्रोफाइल होगी वो प्रोफाइल हमने फैच कर ली। ठीक है, देन यू कैन स्टोर इट इन वन वेरिएबल। ऐसा कोड हमने मिक्स टीएमएल एक्सेप्शन में भी देखा था। सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम प्रोफाइल वेयर आईडी, आईडी क्या होनी चाहिए, करंट यूजर की जो प्रोफाइल आईडी है वो बराबर। ठीक है, हमें प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, नाउ वी हैव ट्राइड द कंडीशन। इफ इफ प्रोफाइल इज डज नॉट इक्वल टू, यू कैन से सिस्टम एडमिन। ठीक है, तो प्रोफाइल सिस्टम एडमिन के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो पी डॉट नेम, जो करंट यूजर है उसकी प्रोफाइल निकाली, अगर वो सिस्टम एडमिन के बराबर नहीं है
क्या हो जाए, एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, acc डॉट एड एरर, सॉरी यू कांट डिलीट अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, देयर इज नो एरर। लेट मी चेक वी आर कॉलिंग दिस इन trigger or not. So till now we are not calling, I'm going to call it. Go to the main class, take the method, yeah. So now what I'm doing, I'm going to check it। ठीक है, तो सिस्टम एडमिन को तो एक्सेस इन वॉट एवर और आई एम यूजिंग इट्स द सिस्टम एडमिन, और सिस्टम एडमिन को तो एक्सेस है, तो ये एरर मैसेज तो डिस्प्ले होएगा नहीं इस और के लिए, बट कोई और यूजर ट्राई करेगा तो डिस्प्ले होएगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, चेक करना है कि कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, नॉट इक्वल की जगह इक्वल लिख देता हूँ। अगर प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, सिस्टम एडमिन के लिए एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो नोट लगाना है, तो कोड तो ठीक ही होएगा फिर। ठीक है, फॉर चेक द कोड आई एम राइटिंग, अगर प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है, उल्टा कर दिया मैंने, सिस्टम एडमिन को एक्सेस ही नहीं दिया, सबको एक्सेस दे दिया, टू चेक द फंक्शनलिटी। ठीक है, क्योंकि हमारी और सिस्टम है, तो आई एम रिफ्रेशिंग द कोड एंड फर्स्ट आई एम चेकिंग कि ये रिकॉर्ड एक्टिव वाला है या नहीं, एक्टिव नो। अगेन आई एम गोइंग ट्राई टू डिलीट द रिकॉर्ड, ट्राई किया, सॉरी यू कांट डिलीट अकाउंट रिकॉर्ड, दैट मैसेज इज डिस्प्लेइंग। Okay, because I'm system admin doesn't have access to delete the record। अगर सिस्टम एडमिन को ही देख देना चाहते हो तो नॉट इक्वल टू, सिस्टम एडमिन के पास ही है। किन्हीं पर्टिकुलर 3 प्रोफाइल को देना चाहते हो, पी डॉट नेम इजकल टू सिस्टम एडमिन एंड पी डॉट नेम इक्वल टू स्टैंडर्ड यूजर, लाइक दैट यू कैन राइट। ठीक है, कि कि ये प्रोफाइल हो 5 तो इनके लिए एरर मैसेज आते हैं। सो डू यू हैव एनी डाउट इन दिस सिनेरियो? No doubt. Okay then,